The first step to set in motion the process of new embodiment of the deities begins with Gajapati Dibya Singh Deb, the king of Puri, performing the Mahavakya Sankalp. This time it began on the morning of 29th of March. The ritual performed in the palace designates one of the palace priests as Acharya and empowers him to conduct all necessary rituals during the Banajaga Yatra, the journey into the forest for the holy trees. As a token of his resolve and authorization, a silver plate with a piece of gold, a coconut, some grains of rice, the sacred thread and silk cloth is handed over to the Acharya. A second plate with similar items on it is also given to the priests to hand over to the leader of the journeymen known as Visavasu. During the afternoon of the same day, a festive mood of devotion prevails outside the main entrance of the temple, Sinhdwar, the Lion's Gate. Inside the temple, concealed from view, a group of servitors of the deities, known as Daitas, receive garlands from the deities, Sudarshan, Balbhadra, Subhadra, and Jagannath, as a token of the divinity's resolve to bless the journeymen in their unique search for the sacred trees. These garlands of divine command, known as Agya Malas, 4 in all, are handed over to the leading Daitas. Still concealed from view, red silk scarves are tied on their heads. The staff of Sudarshan, the spinning wheel in Vishnu's finger, clad in red silk, always leads the journey of the Daitas. From the temple, they proceed to the king's palace. Here they receive the silver plate from the palace priest and retire for the night to a mutt nearby called Jagannath Ballabh. From this mutt in Puri, the Daitas, along with a handful of Brahmins, journey north to Kakatpur,
The 2 days journey of 60 kilometers ends when they reach Deoli Math on the banks of the Prachi river. This auspicious piece of red silk on them marks them out as special men. आपन को मुंडर रे जो साड़ी बंधा है चे ये कोन कहा साड़ी है ये गोटा साड़ी है गोटा को हमर गोटा साड़ी कहंती ये कोन गोटा साड़ी माने ये 12 हाथ खंडुआ ये गीत गोविंद लिखा है ये आमे जो 4-12 ग्राई आज्ञा मानले गोटा साड़ी आ हम भाई मान जो असलाम पछरे से मान सब आधा साड़ी पिनंती से गीत गोविंद कोन याद गीत गोविंद लिखा है चे जयदेव कर गीत गोविंद लिखा है जगन्नाथ जयदेव प्रिय से भक्ति जयदेव भक्त हिसाब रे से गीत गोविंद जयदेव लिखिले तांकर श्रद्धा है जगन्नाथ से गीत गोविंद सब देह लाई करती से वस्त्र आम पिंधिक आसु आ गीत गोविंद या लिखा है पूरा लिखा है देखो गीत गोविंद लिखा है राधा माधय हृदय तत्यज ब्रज सुंदरी तुलसी The Daitas camp here in Deoli for a few days until the first of the sacred trees is found. The staff of Sudarshan, the wheel of Vishnu. The 4 garlands of divine command, Agya Malas, arrive in Deoli in the temple cart. The Daitas carry them for safekeeping into the Deoli shrine. Only 2 kilometers from Deoli Math is the temple of goddess Mangala in Kakatpur. The search for the holy tree or daru can only begin after the goddess is ritually appeased and blesses the effort. भगवान जगन्नाथ माँ मंगला पुत्रा और मातार संपर्क जगन्नाथंकर ज्ञाति पंडा जहाँ को दैतापति बोली कहा जाए विश्वावसु वंशोद्भव जो माने से माने आज्ञामाल नहीं आसी आज दिन माँ पाखरे ताहाकू माँ श्रीअंगरे लागी करिवे माँ देखियो पुअर आज्ञामाल मो पाखु आसिला नूतन कलेवर हब The men from Mangala's temple reach Deoli with their formal invitation to the Daitas. आमर पुरी जो आसिचंती जो चक्र से चक्र आम सामने रहिबे ताकू लंका नहीं कि जिबे आमे समस्त भाई माने
एवं आज्ञामाला आनिथिबा दैता माने एकत्रित होई आम संगे ब्राह्मण एवं विश्वकर्मा गोटे प्रसेसन रे एठू जीवु मंगलांगर निमंत्रण आसतबो से निमंत्रण संगे आमे मंगलांगर जहाँ प्रसेसन आसतबो तांगर घंट छती काली एवं अन्यान्य जहाँ थिबो आमे से प्रसेसन जाई मंगलांगर पाखरे पहुंचू मंदिर को महाप्रसाद जगन्नाथ शाढ़ी ये मंगला पिंधिबे ये शाढ़ी तापर ये शाढ़ी मध्य पिंधिबे एटा ये को मुंडे पकेबे गीता गोविंद ये लेखा अछि यादेरे ठाकुराणीकर मंग सकाल धूप सरी सकाल धूप सरी आम जा ठाकुर पाखे समस्त जा पहुँचबू समस्त दैतापति माने द्वार बंद करी भितर 108 गरा पानी लाई करी ठाकुराणी को मार्जना करी निवेदन करी फेरी The Daitas accept the invitation and accompany the goddess's people back to her shrine. The Daitas carry with them all the gifts that they have brought along from the Puri temple, especially from Lord Jagannath for Mother Mangala. The Daitas arrive at the Mangala shrine with the staff of Sudarshan leading the way. While the marjana, or ritual bath of the goddess, is carried out by the Daitas behind closed doors, the Brahmins do Chandi Path. They chant the Durga Saptashati Chandi mantra. Every morning for the next 7 days, the Brahmins are here to chant the mantra. This regular effort of the priests is made with the single purpose of persuading the goddess to give them some indication of the direction in which the sacred trees are located. The first Neem tree, that of the deity Sudarshan, is found near the Niyali Madhav temple. से आमको आदेश दियंती जे जो दिग को आदेश दियंती से दिग को आम माने जाओ दिग को जीवा द्वारा लोक मैंने आमको देखिकी आम पहलुण देखिकी से आमको पचारती तुम मैंने कड़े आस जगन्नाथ महाप्रभु दान अनुष्ठान यही दिग को आसचु माँ ठाकुराणी आदेश आम यही दिग को आसीचु से दिगरे जिते निम्ब वृक्ष थाए से निम्ब वृक्ष आम वर्णना बा तार उंचा बा तार गोली भाव शंकु सब लिखिकी आणु केतोटी दिगरु केतोटी जिनिस आम पाऊ तब लिखिकी आणु माँ ठाकुराणी पाखे से पत्रिका आम पकाऊ माँ ठाकुराणी को जो ठाकुर हवा सकाशे आदेश है सेटा ठाकुर आम करिकिरी नियो गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण
Hare Sri Krishna Govinda Hare Murare He Nath Narayana Vasudeva जो दारू वृक्ष अच्छी माधव पाखे देखिए चारिपड़ा एक बरगछ जो अच्छे देखिए से चक्र मारे चिन्ह सब अच्छी मैंने देखिले आपन से परिवेश को आप मनमुग्ध हो ये तीनोटी कलगढ़ भितर जिते दारू संग्रह करूँ या भितर ये गोटे सुंदर दारू आंक भाया दारू आ पूर्व केवे मिल न तेणु यांपर किसी आम विश्वास रही ठाकुर जो पहंडी हुई पहंडी समय ठाकुर को आम जो आणु पहंडी पहंडी कला समय ठाकुर तले कची हुई से कची हवा द्वारा जो दारू विग्रह दारू मूर्ति जो तैयारी था आघात आसे तेणु जदि निम्ब वृक्ष न करा जाए अन्य कौन वृक्ष करा जाए ताले से शीघ्र नष्ट हो तेणु जेहेतु लिंबर शक्ति अधिक से लिंब गछ को बछा जाए उपयुक्त दारू वृक्ष निमंते केते गुड़े लक्षण रही भितर केतक प्रधान लक्षण है जे दारू वृक्षटी सरल भाव एवं कौन से शाखा न बाहरी मूलरू प्राय 15 फुट खंडे हो चतुशाखा हो चढ़े बसा बांधि नथिबे एवं सर्वश्रेष्ठ लक्षण है जे ताकू नागसाप जगुआली रही Bhumi Shuddhi, or the purification of the ground where the sacred tree stands, is the first ritual at the tree performed by the priests. They chant the Patal Nursingha mantra 108 times, and each time an oblation is made to the fire. भूत प्रेत माने से वृक्षरे बसा न बांधिथिले मध्य जदि श्मशान बा परित्यक्त अंचल रही ताले सेठारे से माने बसवास करी से वृक्षर सुरक्षा प्रति दायित्व ग्रहण करवा एटा हम शास्त्र रही एवं से शास्त्र को आम स्वीकार करूँ तेणु तारी से विधा से अपसारण करने निमंते प्रथमतः भूमि संस्कार करा जाए. After the purification is over, the ritual bath of the tree is performed. The Daitas pour 108 pitchers of water. Soon after the bath, the Agya Mala is brought to the tree, and with it, a new cloth is wrapped around it. Before the elaborate fire worship or yagya can begin, the secret ritual of sowing of seeds or ankurarpana is carried out. The forces of the cosmic trinity, Brahma, Vishnu, Maheshwar, are invited by the priests to incarnate as the shoot or the ankur and be present in this form at the yagya. The yagya, the grand presentation of fire worship,
in the forest requires 1,000 oblations to fire with the chanting of Nursing mantra, and an additional 250 oblations with Patal Nursinga mantra. It takes the Brahmins nearly 2 days to complete the fire worship. The oblations and the chanting carry on late into the night. The yajna culminates ceremonially with the Purnahuti, or the final oblation, when the Daitas also gather around the fire to participate in it. Then the sacred fire is doused. The festive mood of the common people carries on through song and dance, all in praise of Krishna. ये हूँ सुना कुराड़ी रूपा कुराड़ी ये समस्त जिनस आमर यज्ञ देहरे लगे गछ ये सजन जो भूमि साफ कराए यही सुना कुराड़ी और रूपा कुराड़ी द्वारा कार्य साधित होपर लुआ कुराड़ी द्वारा गछ को भूमि साफ कराए. Soon after the yajna is over, the sacred tree is cordoned off from view by a thick cloth, and within this enclosure a symbolic sacrifice is made. Soon after the sacrifice, and still hidden from view, the tree is successively touched by gold, silver and iron axes. The cloth around the tree is then removed, and axing begins in full view. केमती बास्ना हुए से आप निजे अनुभव करेंगे. यहाँ कहले कि विश्वास कर न कर निजे जी उपस्थित क्षेत्र में से अनुभव कर बास्ना जो सुगंध हुए तो अनुभव करेंगे. The delicate fragrance that the freshly cut tree gives out is like sandal mixed with a tinge of rose. It pervades the entire atmosphere. Beginning any time in the afternoon, the axing goes on into the night. Some 6 to 7 hours of axing goes on before the sacred Neem tree falls to the ground. The following morning, the main trunk is chipped into an oblong shape, all done only by the axe. The sacred wood is never trodden upon with bare feet.
From the ritual sowing of seeds or Ankurarpan until the tree is felled, every one of them in the forest sojourn remain in rigorous fasting. Once this is over, it is time to relax. नौ हजार ब्राह्मण सेवक अच्छा आम केवल 100-150 मात्र शूद्र सेवक अच्छे आम चारोटी सेवक मौलिक गोटे हूँ पंडा गोटे हूँ पशुपालक गोटे हूँ दैतापति ये तीनोटी सेवकर जगन्नाथ को छुईबार अधिकार अच्छे आउ कौन सी सेवक 121 प्रकार कहारी अधिकार नहीं नवकलेवर काली आज भितर जो प्रभेद बा परिवर्तन होती ये केवल लोके डेकोरेट हो आम उपर बहुत जनसंख्या माड़ी बसुची आम आमर सुचारू कार्य करने भी असंभव हो पड़े तेज पुलिस अनेक किसी व्यवस्था होती जहाँ लोक जाना पाँच प्रकाश हो सब कथा फिटी जा द्वारा आम छुआ मैंने भी किसी उशृंखल हो जाती समस्त अल्प वयस्क आ बुढ़ा मैंने समस्ते मरी जाती केवल आम जड़े 2 जन मात्र बंची अल्प वयस्क तेणु किसी उच्छृंखलता अच्छी ये तो गोटे महान कार्य ये तो 20 वर्ष ठाकुर होकर बसवे बहुत भोग खाइबे बहुत लोक देवे नेबे ये तो किसी साधारण कार्य नुह आम भी जहाँ आनी से भी बहुत उच्च कोटर ठाकुर था While the sacred log is made ready for the journey, a special vehicle is constructed for carting it. दारू ठाकुर जो गाड़ी रे जाते ताकू शगड़ नुहे शगड़ी कह जाए शगड़ी 4टी चक्का थाए 4टी चक्कार 8टी पंदारी थाए एवं तादरे टिके तेल दिया हुए अखटा केंदु काठरे हुए आ तार फ्रेमटा हम ऊपर जो सेटा हम कया काठरे चक्काटा हुए बड़ काठरे यही प्रकार है चक्काटा 3 भाग करा जाय थाए 3 भाग कर फिर जॉइंट करा जाय थाए रदि रास्ता किसी असुविधा हुए गोटे पर्सन काढ़ी मध्य चेंज कर पारा जाय पारिबो ए प्रकार है ठाकुर जानते बर काठटा माने रोड रास्ता चलला बेले सेटा टिके बेसी टेमड़ा काठ छकटा स्ट्रांग रखे सेते बर काठरे करा This spot yielded the tree for Devi Subhadra, sister of Lord Jagannath. Once the four-wheeled cart, the sagadi, is ready and the sacred logs are loaded, covered with silk and tied, the return journey to Puri can begin. হইলা চিরে তাঙ্কর উচ্চে হরি ডাকি কলে সে পড়
there is a large turnout to greet the sacred log and celebrate its journey to Puri. From village to village, people willingly volunteer their labor, and everywhere the same feeling reigns, that it is their privilege to do so. Once the Daru moved on and out of the villages where they had once stood as trees, those places are returned to a new kind of solitude. We are back to the place where the first tree, that of Sudarshan, stood. A bamboo pole with a flag of worship is all that remains to mark the spot. ये जो वृक्ष थेला हमर लिंब गछ ये लिंब गछ टिकी आम देखिलु ये तो आम हिंदू कार्य कौन लगी पारनी या हाणी देवाई प्रस्ताव आम कलु से जो महाराणा नब बोलिक आम साथी जवाब करता से किसी जमी आसिक पहुँचला लोक आणिक हाणिक नब पैसा पत्र दिया निया कर हाणिक नब सब आम कहल बाबू ये गछ आम परदिन रोषे करूँ ये एत गुड़ा साप आम देखिलु गछ देहरे दाला माकुड़ी खेलुंट आम भी समस्ते अवश्य 10-40 जन लोक थी समय देखीचु तमें जदि नब तमें ताले से अनुष्ठान में पैसा खर्च कर न कर आम से गछ पैसा आ धरबुनि से महाराणा आगे एति कहू महाराणा से आसला गछ पाखे ऊपर को तौक लक्ष्य कर महाराणा से मुंडिया मारला कहला भाई मुझे गछ नेबिनी हाणिकी सी तार विदा हो पड़ेगा गछ तार सेमती रही ये जो दैतापति मैंने आर कलबर आसते ये हुमराम करते से पाखे मुझे अच्छी से कहले जे यार कला भूल हो बयस है ये आर कलबरू जाए जीव अच्छा से गछ तो सेमती गला बढ़ुला आमर सी ने कि ने आम कहीं से बाबद कौन गोटे दायित्व नबू तापर ये जो सर्प बाहर से दिन ठूँ बहुत लोक परामर्श कला बल पचरा पचरी कला बल कहले से गछ दारू हम तेमें से गछ कहीं बिक्री कर गछ जो दिन ठूँ गला मारी ए बाबद साहस दबुची मन भी दुर्बल लगुच या भितर आसापी आ मनटा सेमती आग्रह लगुनि जगहटा निकांचेरा लगुच पूरा Clearing the difficult roads of the villages, the cart now reaches the tarmac road to Puri. Here, the wheels roll smoothly. The journey of the logs takes several days and nights, and they are brought back by the Daitas in the order in which they are felled. First to come in is the sacred wood of Sudarshan from village Niyali Madhav, followed by Balbhadra from village Ramkrishnapur, Devi Subhadra from Malda, and Jagannath from village Dadhimach Gadia,
all found within a radius of 130 kilometers from the temple at Puri. उन्नीस वर्ष पर हुए नहीं जितेबाला दुईटा आषाढ़ हुए से नवकलेवर हुए सेटा 19 वर्ष हो पारे 8 वर्ष हो पारे 12 वर्ष हो पारे आषाढ़ मासरे श्री जीव मानकर रथयात्रा होता है। प्रत्येक दिन श्री जगन्नाथ बलभद्र एवं सुभद्रा मंत्र द्वारा स्नान करती किंतु वर्षर गोटे दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा दिन तांको 108 गरा पानी स्नान करा जाए। सपोज आपण आज बाल्टी पानी गाधौछंती 3 दिन पर आप 50 बाल्टी पानी गाधेबे आपन देह स्वाभाविक खराब हो से जगन्नाथ प्रतिदिन मंत्र द्वारा स्नान करुछंती किंतु ज्येष्ठ पूर्णिमासी दिन 108 गरा पानी गाधेबा जोगु तांको शरीर असुस्थ हो जाए और 15 दिन पर्यंत से काहाकू दर्शन दियंती नहीं। यही जो 15 दिन समयटा आमको प्रतिवर्ष मिले प्रति वर्ष जगन्नाथंकर जो पहंडी रे जहाँ सब असुविधा होता है से 15 दिन भितर आम ताकू ठीक भाव करी पुनर्बार तांको रथ उपर को नहीं था। सेमती आषाढ़ मासरे नवकलेवर एइथिपई करा जाए नूतन विग्रह जो निर्माण करा जाए सेतिपई दीर्घ समय दरकार एवं से दीर्घ समय 15 दिन आम प्रथम समय पाऊ प्रतिवर्ष और आउ गोटे मास अधिका आम ये आषाढ़ मासरे पाऊ जहाँ द्वारा कि आम से 1.5 मास भितर ठाकुरंकर नूतन विग्रह निर्माण करूँ। Finally, the carts with their sacred cargo reached the broad avenue of Puri. मंदिर आ गोटे बेपार आरंभ हम से किसी यज्ञ हम मूर्ति निर्माण हम आ मूर्तिर घट परिवर्तन हवा पर्यंत से मूर्ति कोइलू वैकुंठ अमावास्या दिन राति जो फंपा अमावास्या जो ए मासर 15 दिन से मासर 15 दिन मझे आसो मल मासर मझे आसो फंपा अमावास्या से दिन जगन्नाथ महाप्रभु गोटे देह विसर्जन हम आ गोटे पुनर्जन्म हम आम से दिन राति देउलकरण शेष पर्यंत आम सागे रे देउलकरण आसीगला आ मंदिर में कहीं रे ना से मंदिर 3 थर शोध हो सारी था थे गवर्नमेंट पुलिस साहाଯ୍य थे आम टेम्पल पुलिस साहाଯ୍य थे आम निर्दिष्ट सेवायत कर्मचारी मान साहाଯ୍य थे आम निजे देउलकरण सागे बुलिक संपूर्ण देउल समस्त काढ़ी द्वार ताला पकी ये एंकु सब सिंह द्वारा गुमुट भितर रहा सुविधा करदे आम सब भितर को फेरी आसला आम सागे 4 जन बुद्ध दईता जेकि जाकि नवकलेवर करेंगे सागे प्रतिमा पात्र जी से अंत 2-3 घंटार काम से काम कर सारे आम समुदाय शरीर को विसर्जन देवापिका बोही नहीं जीव कोइल वैकुंठ तापर आम कार्य सर आम जीवु जमीका माल भाई मैंने मुर्दार को पड़देला जो सब आचरण करती जाकि मार्कंडे गाधेबू मार्कंडे गाधे पिता खाई घर को जीव से दिन टू 10 दिन आम कुटुंबिक उत्सव पालन करूँ। The last daru, that of Jagannath, enters the temple
behind the high walls and shut doors of Puri temple, work on fashioning the new gods begins. The entire process is completed a day before the annual car festival, the Ratha Yatra, an occasion that brings the gods out into the streets to be amongst the people. With the scaffolding removed, the Puri temple wears a fresh new look for the festive occasion. Having journeyed on the chariots and having sojourned in their aunt's home at Gundicha for revelry and recuperation, the happy gods are now returning to ride the gigantic chariots back to their permanent abode. As always, first to come is the freshly made Balbhadra, the eldest of the triad. Next, it is Devi Subhadra's turn. Being light of weight, she is carried up to her chariot with relative ease. And finally arrives the round-eyed dark god Jagannath, the incarnation of Vishnu, of Krishna, the favorite of the thronging masses. Once all the three members of the triad are seated in their respective chariots, the king of Puri, Gajapati Dibya Singh Dev, arrives to perform the ritual of sweeping the chariots. Once the Gajapati finishes his part of the work, the chariots are ready for their final journey home to the great temple.